Manual testing. Okay. What about SQL and API? API is done. SQL is remaining. SQL is not asked yet, right? No. Okay, let's start then. Okay. Yes. Yeah, Raj, please introduce yourself. Yes. Good afternoon, sir. My name is Arash Tamkin Sheikh. I have completed my Bachelor's of Engineering from Aurangabad University. I am currently working with Infosys as a software test engineer. I have 2 years of experience. In my 2 years of experience, I have got chance to work on investment banking. I have also worked on Unix and SQL and used defect management tool like Jira. And the roles and responsibilities in my organizations were like SRS analysis, test scenario, then preparing test case design, preparing traceability matrix, then doing test case execution, interacting with client, then defect logging, doing various types of testings like smoke testing, sanity testing, functional testing, non-functional testing, retesting, regression testing, then doing API testing, preparing daily status report and weekly status report. Yeah, that's all about me. Thank you. Okay, so you work on 2 different projects, right, Raj? No, one project, investment banking. So you're showing how many years of experience? 2 years of experience. Only 2 years of experience with Jira, right? Yes, which years? You say that SQL is not covered in the last mock, right? Yes, sir. Fine. So can you tell me what is test closure activity? Test closure activity is nothing but it is done after the test case execution, in which we see how many test cases have passed or how many test cases are failed, the priority of the test cases, then expected result is matching, means how much result have matched with, means expected result is matching with actual result or not. That all is mentioned in that test closure. Okay. Okay. So let's suppose if you have received any new application. Okay. Any new application is given to you. As a tester, how you'll do the testing on it? Means so firstly, I will analyze that application, understand that application, then write some, means design some test scenarios for that application, then prepare test cases for that, then do traceability matrix on that requirement. Then I will do review for the test cases. Then I will do test case execution on that requirement. Why you're doing all these things if all these things are already ready? It is necessary to do no, so means to write. If new requirement is provided, then we need to do it. Means we have to write some test scenarios, test cases for it. Yeah, that's correct. If new, let's suppose that if there is new application, check with your team that whether is any legacy application is available or not. क्या उसका कोई पुराना version already available है? ठीक है ये new application है, but पुराना application जो already running में है, उस पे आप practice करके देखो, exploratory testing करके देखो, समझो वो Yes, exploratory testing. Yes. And then come to this new application. ठीक है, no doubt जो आपने बताया इसमें कुछ गलत नहीं है कि analysis and all these things you will do. What if like हमारे पास मतलब ये तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन ये नया एप्लीकेशन को समझने अच्छा अगर उसके पास कोई पुराना वर्जन हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, व्हाई नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि दिस इज द फंक्शनैलिटी, बिकॉज व्हेन यू विल टेस्ट द न्यू एप्लीकेशन माइट बी पॉसिबल दैट कि कहीं पे आपको बग दिखे और आपकी अंडरस्टैंडिंग ना होने से आप उससे कोई फीचर समझ लो, राइट? Yes, sir. That is the another issue. Okay. Okay. So yeah, tell me what is zero testing? Zero testing is nothing but smoke testing and sanity testing. Where as soon as we receive the build from the developer, we firstly do the testing on that build. We see that that build is testable or not, means it is stable or not. And if it is not stable, then we will raise the defect to the concerned developer. Let's suppose if I'm giving you one application, let's suppose it's Zomato. Zomato is an application I have given to you. So how you'll perform smoke testing on it? Smoke testing on that Zomato application.
Means I will see that the application is stable or not. Means How you see the application is stable or not? can we log in it? Can we log in into it or not while The using? answers are not complete. Raj, try to give the complete answer. Yeah, you're saying correct. Like we are checking the stable or not, but I don't understand from your point of view. Like, what is the definition of stable from your point of view? Might be stable definition from my point of view is different. So whenever this kind of question is coming, you need to answer in detail. Like how you come to know that yeah, this application is stable, right? Means we will do different types of testing on that also. Means how does that application is behaving, or input domain testing, or error handling testing by entering the invalid username. So this is a negative testing to check how the application is stable or not. We don't need to do like enter negative things, all these things. How we check that particular application is stable or not? While doing the testing on that application. How? My question is still the same. How? How we do that testing? Write some test scenarios, then see that write some test cases, see expected result is matching with actual result. While doing smoke testing, we are writing scenarios. No. Then how? We are only doing testing on that. Then how you saying that, like writing the scenarios and all? Let me move to another question. Yes, sir. How much time you need to create a traceability matrix? It's totally depending upon the test cases. If suppose there are depending upon test cases, if the test cases are complex one, then we need the more time for preparing the traceability matrix. And if test cases are not complex one, then we need less time to prepare the traceability matrix. Okay, why we are creating backward traceability matrix? To see the is there any defect, it is the mapping between the requirements and the defect. Why we are doing this? Whatever the missings that we are remaining in the review, for that we are doing the backward traceability matrix. Are you sure that is the reason? Yes, sir. And for the defects also. No, that is not a correct reason. Think on it twice. This one is not the correct reason. Why we are creating backward traceability matrix? To identify the defects. Come again. Can you speak a little bit louder? To identify the defects. No. Have you worked on regression testing? Yes, sir. How many times you are performing regression testing in a particular release? Sir, it's totally depending upon the build. If we found any defects in the build, we raise the defect to the concerned developer. Whatever he makes the changes in the code, or he adding the code or subtracting the code or modifying the code, totally depending upon that. Let's suppose if you didn't find any bug in the entire release, then you will not perform regression testing. No, we will perform regression testing. As you say, that may totally depend upon the bug. No, sir, totally depending how many changes you are doing on the code, modifying or adding some. So how many times you will perform? Excluding, let's suppose there is no bug we have received. 2 times, sir. When? At a full regression testing and at a regional regression testing. That is a type of regression testing. Means I didn't ask the types. My question is when
when the build is impacted at that time, and when the You are working in sprint, right? yes, So according to that, you should answer like how many times you will perform regression testing. Consider that point in the mind. 6 to 7 times. कब कब? सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, या खाली पेट? 6-7 times. What is this? This is not a tablet. Haras. You are not like. See, इसको इस तरह से नहीं आंसर करना है. Okay. रिलीज से पहले तो हम करेंगे. एंड अगर हमें स्प्रिंट में टाइम मिलता है at the end, like let's suppose if you have enough time in that particular sprint, then you can do it, but रिलीज से पहले तो हमें जरूर करना है. ठीक है, 6-7 टाइम ऐसा आंसर मत दो इसको. ठीक है, गलत Yes. चला. What is sprint hardening? Sprint hardening. Don't know, sir. Okay. So, have you worked on any non-functional testing? Yes, sir. Which one? Share me that scenario. Scenario for that. Means where you done this non-functional testing in your project? When the application was crashed at that time, to miss that that application was at abnormal situation at that time for recovery. Then for sanitation testing, when extra implementation or extra requirements were added in the requirement. So which kind of extra information added in your project which you identified? That were not mentioned in SRS document. Or Yeah, tell me the example. Like you faced this situation, right, for your project? Yes, sir. Yeah, tell me the exact scenario. Only 10 watch lists should be added in the in that application, but the developer had added 20 watch lists for that. So at that time. Okay. Okay. Fine. So what do you think if you are testing any e-commerce application, which type of testing is most important here? E-commerce application. Yes. Non-functional testing, then security performance testing. Tell me. Non-functional testing, security. अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ गलत भी बोलोगे ना तो भी वो सही साउंड करेगा, और लो कॉन्फिडेंस के साथ सही भी बोलोगे तो वो गलत साउंड करेगा. ठीक है, नाउ यू हैव टू डिसाइड किस तरह से बात करना है. ठीक है. Yes. Like non-functional testing on that application for e-commerce, then performance testing or security What will testing. test? As you saying that performance testing, क्या चेक करोगे आप उसमें? How much load is applied on that application? Load in the sense? Means suppose if that we are logging into that application, if so many of the client has a miss login at a time, that application get crashed, means it is not working, so we can't log in at that time. Error, it is throwing an error message. Okay. Tell me any unique bug which you which you found out in your career, like आपको लगता है कि वो बहुत यूनिक था, आपके प्रोजेक्ट में बहुत यूनिक था, जो आपको मिला, यूनिक चैलेंजिंग था. Okay.
was that when we have placed the order, but it was not showing that the order has been placed. Is that unique bug? I think so. This defect I have found while doing the testing. Okay. So my next question is, what do you think, like in sprint planning? In sprint planning, what is important task for a tester Important task for a tester. in sprint planning? Yeah. To understand the requirement, whatever the requirement that product owner is going to explain regarding that user story, Mhm. or he's going to give the description about that, means how we are going to work on that requirement, Okay. or difficulties that miss one of the requirement we don't understood in sprint planning meeting. Okay. Fine. Fine. So let's move to the SQL. Yes, sir. So you work on SQL as well, right? Yes. So yeah, tell me, what is denormalization? Sorry, sir. Denormalization. Denormalization. Yes. Hmm. Denormalization, I don't know. Give me an example of subquery. Which query, sir? Subquery. Subquery. Do you know how to Subquery. write subquery? Query within query? Query within query. Yes, sir. Like for finding the highest value. Give an example. Like select maximum salary from employee where salary is less than, in bracket, select maximum salary from employee, bracket close, semicolon. Oh, correct. Fine, fine, fine. What is the difference between join and union? Join and union. In join, we join two tables together to find the common data from the tables. And in union, we join two statements together to find out the result of the two statement output, means output of that two statements together. Means like same model. Yeah, tell me. Means we have to join two statements together for finding out the results for means output for that results after joining two tables statements. If I use join, then what type of output I'll get? Common data. Common data. And in case of union, Common result. so Same that is result. the difference. I'm asking No, the difference. no, both are same, sir. Both are same. Then why we are using? तो एक ही use करना चाहिए ना, फिर दो क्यों use कर रहा है? For using the statement, we use union to select the statements. To select the statements. क्या select the statement? Karaz? Yes, sir. I didn't get you. Don't know. Okay. Okay. Fine. Okay. There is one table which consists of 100 records. Okay. I want to delete duplicate records. How can I do this? One table consists of. 100 records. Okay. I want to delete duplicate records. Duplicate records. Sir, I can consider any table. Yes, you can consider any table.
Let me repeat the question Sir, again. Okay. no, sir. Select. Can I take example of emails or email and custom? Anything, whichever you want. Okay. Select email from customer, group by email having count in bracket star greater than 1. Then delete from customer where email exclamatory mark equals to in bracket email from customer group by email having count in bracket star greater than 1. Have you tried this one, Araj? Yes sir, ये देखा था उसमें ट्राई किया ये वाला? सर्च किया था एग्जांपल. वापस बताना. ट्राई नहीं किया था सर. जस्ट email select email from customer group by email having count in bracket star group by email okay having count in bracket star greater than 1. okay. Then delete from customer where अलग क्यों रही है? कैसे उसके आगे कंटिन्यू? हाँ उसके आगे सर डिलीट करने के लिए फॉर ये मिस फेच करने के लिए डुप्लीकेट, फिर वो डुप्लीकेट्स को डिलीट करने के लिए सेकंड एग्जीक्यूट करना. यू मीन टू से सेकंड एग्जीक्यूट करना है. हां डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल एक्सक्लेमेटरी मार्क इक्वल टू इन ब्रैकेट वो जो फर्स्ट वाली क्वेरी थी वो पूरी क्वेरी ब्रैकेट प्लस सेमीकोलन. वेयर ईमेल नॉट इक्वल टू एक्सक्लेमेटरी इक्वल टू आगे वो फर्स्ट वाली क्वेरी ब्रैकेट प्लस सेमीकोलन. यहाँ लिखना है आपके डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल नॉट इक्वल टू से ग्रेटर देन 1 सेमीकोलन ब्रैकेट प्लस सेमीकोलन. by email having count greater than 1. ये नोट्स में था सर, नोट्स में था. Okay, I'm little bit like doubtful on this. Try कर लेना एक बार, ठीक है? Okay sir. I'm not sure like ये execute सही से होगा. This query is in the given notes. So this one. हाँ ठीक है. No problem. ठीक है. ट्राई करो एक बार. आपने ट्राई नहीं किया देने के बाद उन्होंने? नहीं सर, भी करना है वो ट्राई. अब करना है, करो ट्राई. ठीक है. यस सर. सो आप जब भी क्वेरी बताओ ना उल्टा मत बताओ. बताते हो कैसे बताओ? डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल नॉट मतलब नॉट इक्वल टू बोलते हैं उसको, एक्सक्लेमेटरी जो है यस नॉट इक्वल टू देन राउंड ब्रैकेट में आपको वो वाला बताना है. तो पहले जो है राउंड ब्रैकेट वाला एग्जीक्यूट होगा वो आपको ऐसे रिकॉर्ड पेज करके देगा जो डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है, जिनका काउंट एक से ज्यादा है, मतलब एक टाइप के रिकॉर्ड मल्टीपल है, वो फेच होगा. देन वो यहाँ आपको डिलीट करने में हेल्प करेगा. मतलब जो पहली क्वेरी आपने बताई वो ऐसे रिकॉर्ड ही फेच करने वाला है जो मल्टीपल है. फॉर एग्जांपल एक टेबल में मोदी 2 बार लिखा हुआ है, अनिल 2 लिखा है, दीपक 2-3 बार लिखा है, वैसे रिकॉर्ड्स वो उसके सामने आएंगे और वो रिकॉर्ड वो हम यहाँ बोल रहे हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ईमेल नॉट इक्वल टू. ठीक है, मोटा लॉजिक ये समझ में आ रहा है, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा रन करके देख लो. ठीक है, यह है तो एग्जीक्यूट ही होगा, बट लॉजिक समझो पहले कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, क्या आउटपुट देगा, ग्रुप करके देगा ऐसे रिजल्ट्स का. ठीक है. ठीक है, अगर प्रिपेयर हो तो अच्छी बात है. ठीक है. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन. ठीक है, देयर इज वन स्मॉल टेबल एम्प्लॉय, ओके, नोट डाउन कर लो, which consists of employee ID, his salary, address, okay, and department ID. एम्प्लॉय टेबल है, उसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सैलरी है, एड्रेस है, डिपार्टमेंट आईडी है. ठीक है. दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, which consists of डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम. ठीक है.
Department डिपार्टमेंटल name. हेडिंग और डिपार्टमेंट नेम दो है इसमें, ठीक है? Yes, sir. गेटिंग? Yes. ठीक. So I want to see the name of employees Name of employees. who is from sales department. This is last question from SQL. Huh? Yes. Select staff from department where employee equals to in single quote sales department semicolon. No, this is not correct. Okay. Okay, let's move to the another section. Tell me some commonly Yes. used HTTP methods. Sorry, sir. Commonly used HTTP methods. Which are the commonly used HTTP methods? HTTP methods. जो commonly use होते हैं कौन से हैं? No, sure. No idea? No. Fine. Tell me some authentication techniques used in API. Techniques used in API. Yes, authentication techniques used in API. No, sir. No idea about that. Okay. Last time HR question पूछे गए आपको? Yes, sir. Okay. So there is only one question from my end. Aras, what is your salary expectation? My salary expectations is about 7 lakhs. And what is your current package? My current package is 4.2 lakh. So we are not able to provide more than 5.5. Are you okay? Yes, sir. I am okay with it. How you are okay? You are saying that your expectation is more than 7 lakhs. No, I'm not. I'm not expecting that I will get 7 lakh only. But I want to I want to explore myself and I want to take I want to gain more knowledge. And What if some other company will offer you 7 lakh then? No, sir. I will join your organization. Why? But give me a strong reason why you will join us. Sir, I want to I explore. will join another company. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता. Because वो मुझे जो चाहिए वो दे रही है. Why you joining us? No, sir, because I want to explore myself and I want to take some new challenges and new challenges and exploration to other company as well. And knowledge. Smart to deal with like. Give me honest answer. No, sir, I have read about your company. That company dealing with the employees. Dealing with the employees are good, and whatever the results of the company. feeling के साथ थोड़ा बोलो. It's look like you are doing the acting, okay? So like. No, sir. आप देख कहीं और रहे हो, आप बोल कहीं और रहे हो, लग भी नहीं रहा है कि. नहीं सर, नहीं. No sir. वाली एक्टिंग लग रही है कि बैक टू बैक फिल्म कर रहा है और डायलॉग दे रहा है लेकिन फीलिंग्स के साथ नहीं है. थोड़ा इमोशन डाल के बोलो. No sir, I will join your company. I have done a lot of research regarding your company. This company is very closer to my base location. As I have seen that in COVID pandemic also you have not removed your employee. Yes. So this was the first company who was giving me opportunity right now, like after a long time, like as I have 3 years of experience and I have getting good feedback from my few colleagues. Feeling के साथ you are speaking like no sir. No? बोलो क्या मैं? हाँ बोलो. Yes, miss. Your organization near my location, and I have also heard about your organization from my colleagues who are working in your organizations, and I have also read about your company on website that you are dealing with your employees. You are dealing with your employees.
means you are dealing good with your employees, and the knowledge you are providing to your employees is good one. So that I have read on the website. So therefore, I want to join your organization. Okay, I'm done with your mock. इस आंसर का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना. Yes, sir. How was your mock? Good था sir. Good. ठीक ठाक. Good था. ठीक ठाक. ठीक ठाक था. Okay, कितना % था out of 10? 6, 5, 6. 5, 6. 10 out of 5, 6 का मतलब क्या होता है पता है? 10 लोगों की ओपनिंग है, 10 लोगों की हायरिंग है, वहां पे आराज का हो जाएगा. 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं और 10 लोगों की हायरिंग है, आराज हो जाएगी. यहाँ तक भी चल जाएगा कि 10 लोग इंटरव्यू को आए, 8 लोगों की हायरिंग है, यहाँ तक भी आराज प्लेस हो जाएगी. लेकिन अगर 10 लोग इंटरव्यू को आए हैं और 5 लोगों की हायरिंग है, यहाँ आराज का होना डाइसी है. Yes, sir. अगर यहाँ पे मैं आपको मॉक में पास करता हूँ ना, तो ये 10 में से जो 5 की रेटिंग है वो 8 और 9 तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी. ठीक है. द रीजन बिहाइंड रिजेक्टिंग, रिजेक्ट ये वर्ड गलत है, रीमॉक. ठीक है, रिजेक्ट वर्ड गलत है. रीमॉक के पीछे हमारा रीजन यही रहता है कि आपको नॉलेज को एक लेवल ऊपर लाना. इट डजंट मीन हम आपका मोटिवेशन या फिर आपका जो मॉरल है डाउन करने का इंटेंशन होता है. नो, बिकॉज जिस पॉइंट पे हम आपको कह देंगे यस यू आर पास, ट्रस्ट मी, आप लोग कोई भी नया पॉइंट नहीं पढ़ोगे. ये मैं आपको लिख के दे दूंगा, कोई नया पॉइंट नहीं पढ़ोगे, कोई नया रिसर्च नहीं पढ़ोगे. बट व्हेन वी से दैट नो यू नीड टू गिव द रीमॉक, तब आप पढ़ के आओगे. और ऐसा नहीं कि इंटेंशनली बोल रहा हूँ, बट लाइक 10 में से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 जा रहे हैं, इट मीन्स आपको अभी भी पढ़ने की जरूरत है. पहली बात तो बात करते वक्त थोड़ा एनर्जी लेवल हाई रखो. आई Okay, डोंट sir. नो दिस इज योर नॉर्मल टून और या आप खुद को प्रेशराइज फील कर रहा है. आई डिडंट अंडरस्टैंड. Yes, तो sir. सबसे पहले आपको फीडबैक में मैं ये कहूंगा कि कुछ चीजें हैं मैनुअल की. जैसे आपने स्मोक टेस्टिंग के बारे में बताया, न्यू एप्लीकेशन का स्मोक टेस्टिंग करोगे, कैसे करोगे आप ठीक से नहीं बता पा रहे थे. बिल्ड स्टेबल और नॉट, स्टेबल और नॉट. आप समझ में आ रहा है कि रटे रटाए शब्द हैं. जब 2 साल का बंदा है ना, जब वो बोलता है कि एक ही बार बोलेगा वो स्टेबल और नॉट, इट मींस आई विल गो थ्रू द एप्लीकेशन, आई विल चेक द मेन मॉड्यूल्स आर वर्किंग और नॉट. मैं क्लिक करके देखूंगा उसमें मेन मॉड्यूल चल रहे नहीं चल रहे हैं, क्लिक्स हो रहे नहीं हो रहे, नेविगेट करके देखूंगा. दैट इज वी कॉल्ड इट एज स्टेबल है कि नहीं. उससे हम स्टेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. Yes, तो sir. आपको वहां पे वो वर्ड यूज करो. ठीक है. Okay. यूनिक बग, चैलेंजिंग बग, आपको थोड़ा सा एक आध बग माइंड में बना के रखना चाहिए कि ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बग था जो मुझे लगा किसी और को नहीं मिला. काफी टाइम से ये बग हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने ढूंढा. सो आई हैव रिसीव एप्रिसिएशन फ्रॉम माय सीनियर्स. ठीक है. मेरे को मेरे सीनियर ने अप्रिशिएट किया इस चीज को लेके. Yes, sir. स्प्रिंट प्लानिंग में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, आपने सही कहा था कि प्लानिंग में यूजर स्टोरी समझना जरूरी है, बट आप उसमें ये भी ऐड करो कि यूजर स्टोरी समझो, बट ये भी देखो कि कहीं बीए ने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही लिखा है या नहीं लिखा. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है यूजर स्टोरी रिजेक्ट होती है क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया गलत होता है. ठीक है. Okay. उस यूजर स्टोरी का वेटेज सही है या नहीं. 8 पॉइंटर बोला है बट उससे भी ज्यादा है, या छोटा पॉइंट 3 पॉइंटर्स दिया बट वो टाइम कंज्यूमिंग यूजर स्टोरी है. प्रायोरिटी देखो उसका, उसके रिलेटेड हाँ. डेटा उसमें है या नहीं. सो आप और चीजें ऐड करो उसमें. नॉर्मल तो Okay. हम भी ऐड करेंगे कि गेटिंग नॉलेज फ्रॉम बीए की भाई क्या यूजर स्टोरी है, दैट द गुड थिंग. बट बाकी चीजें भी आप ऐड करो जो बाकी लोग नहीं ऐड करते हैं. ठीक है. ये Okay, आपको sir. प्लस प्लस में ले जाएगा. यार ये बंदी के पास तो रियल एक्सपीरियंस है. रियल Okay. वाला भी ये नहीं बोलेगा, वो भी यही आप जैसे ही लाइन बोलेगा कि नहीं हम देखेंगे कि यूजर स्टोरी समझ में आ रही है नहीं आ रही. उसके अलावा भी आप बात कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है. Okay. एसक्यूएल में डीनॉर्मलाइजेशन आप देखो, सब थ्योरी करेक्ट Yes. बताया. जॉइन वर्सेस यूनियन इज समथिंग जहां आप लैक कर रहे हो. मैं कहूंगा कि एसक्यूएल में आपको काम करने की जरूरत है. आई डिडंट Okay. एक्सपेक्ट कि आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स वाला आंसर दोगे, दिया आपने, विच इज गुड. एक बार रन करके देख लेना, मैं श्योर नहीं Yes, बट sir. लग तो रहा है कि लॉजिक सही चल रहा है उसका. जॉइन वर्सेस यूनियन दोनों में काफी डिफरेंस है. ठीक है. समझो Okay, sir. एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है. और ये जो 2 टेबल मैंने आपको बताए थे यूज करने के लिए, वो आपने गलत मेथड से उसमें का आउटपुट निकालने का देखा है. पहले देखो उसमें से मुझे क्या आउटपुट चाहिए, किस टेक्निक से मैं निकाल सकती हूँ. हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें से कौन सी मेथड यूज कर सकती हूँ. ठीक है. ट्राई करो. Okay. और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस में लिटरली फीलिंग्स के साथ आप आंसर दो. ठीक है. Yes, sir. एसक्यूएल Okay. पे ज्यादा काम करने की जरूरत है. एपीआई की भी 1-2 क्वेश्चन मिस हुए हैं आपसे, ध्यान देना उन पे.
कॉमनली देख लो। मेथड्स, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स, गूगल करो आप खुद से निकालो, मिल जाता है डेटा, और आदत बनाओ अभी गूगल करने की। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू आराज। थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक।